Amid the controversy over the use of adulterated ghee at the Tirupati temple in Andhra Pradesh, it was reported that the ghee used in Puri's Sri Mandir would also undergo inspection. Puri District Collector Siddharth Shankar Swai explained Tuesday that although there had been no complaints about the quality of the ghee used for preparing prasad at the temple, the incident in Tirupati had prompted the district administration to take precautionary steps. Swai reportedly emphasized that there were no allegations regarding the ghee used at Shri Mandir, but they had decided to test it to ensure its quality. He mentioned that the food safety unit would carry out the tests and discussions with OMFED or other suppliers as well as the Suar Mahasuar Nijog would take place to standardize the ghee used for prasad preparations. In addition to the ghee used for prasad, the ghee used for lighting lamps at the temple would also be tested. Swai mentioned that the district's weight and measure team, along with the food safety unit, would conduct joint inspections to ensure everything met the required standards. देखो आमर तो वर्तमान बुझी आम जो तिरुपति लड्डू प्रसंग रे प्रसंग टी उठी बट आमर तो जहाँ भी कोठ भोग लगे कि बराती भोग लगे सेमती कौन से आमर अभियोग ना बट तार मान डेफिनेटली आम जांच करूँ एवं तत्सहित आम आगामी दिन में ओमफेड सहित भी आलोचना करूँ केमती आम गोटे स्टैंडर्डाइज्ड वे हो पार जेहेतु विभिन्न प्रकार घी व्यवहार होबार संभावना भी अच्छी केमिति आमे जोटा परीक्षा हेतिबो मानव जार धार्य हेतिबो से बडी भाई केमिति धार्य करिक ओमपेड हो कि हमर कोनोसी अनुष्ठान रो आमे गोटे स्टैंडर्डाइज्ड पाई परियो से दिन से दिगरे आमे आगामी दिन रे संपृक्त सुआर महासुआर निजोग हमर कोठो सुआर हमर जो निजोग अछन जो माने कोठो भोग प्रस्तुत करंती एवं हमर ओमपेड हम अनुष्ठान आलोचना करिके ताको स्टैंडर्डाइज करिवो एवं इमीडिएटली जो अछि हमर फूड सेफ्टी को मध्ये ऑलरेडी आलोचना करा जायछि माने हम खाद्य सामग्री कोंतु किबा रॉ मटेरियल कोंतु ताको भी जांच करिवे ताकि आमे तो सेमती संदेह करू नाहु बट जदी किछि थिबो भी ताको जांच कर। Stay tuned to our Post Live to stay updated.